Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine and enjoying a good time over your homes. We had started our general discussion about the romantic age and the tendency of the romantic period. The lecture which I have delivered to you had three sections. The two sections I have delivered to you in the last week, and in this week we will be talking about the last section of this lecture, which is the general overview of the poetry and the poets of romantic age. Previously, we had talked about different social events and political events like the American Revolution, French Revolution, and in Britain, if we talk about the Industrial Revolution. Along with this, the economic condition of the Europe and especially of England was also creating disturbances and upheavals in the society, especially the concept of free economy, where the nobility and the rich class were transforming society from agricultural to industrial, and because of the establishment of new industries, new factories, the discrimination of human rights was very visible. The labor class and the low middle class were suffering a lot because of the low paid jobs, and because high taxation, and because of the extra working hours into the industries, and due to the broken structure of families. These were the common issues of the 18th century England, because England was transforming politically, not only politically but also economically as well, because this was the period when colonization into Asia by European countries like France, England, Portugal, Sweden, Denmark, it was happening. And this was the same time when East India Company was working very vigilantly in England, sorry, into subcontinent, and the purpose was just to collect the resources, to collect the revenues, to collect the money and the raw material from these colonized countries, and shift those material resources and uh, extra taxes collected from the colonized people, and to shift those resources to England in order to prosper their economy. But at the same time, this was the period of social unrest, because there was a warlike situation into neighboring countries. Especially France was very disturbed due to the revolution which started in 1889, and it affected England and the English society very much. But after talking about all those political and social issues which were instigating the people, not only the people but those events were also inspiring and instigating the poets and the literary figures of romantic age as well. So the tendency of the earlier or the first half of the 18th century in poetry was transforming now, was changing now, because in 18th century it was a tradition, it was a custom in poetry to write into very lofty forms by using very high or rich language, ornamented language, and also the style of poetry was very artificial. Artificial in a sense that the rules and the principles of poetry were followed very excessively, but the content was compromised. कंटेंट जो था, सब्जेक्ट मैटर जो था, वो बहुत से भी ज़्यादा आइसोलेटेड था फ्रॉम द कॉमन पीपल, और उसमें आम लोगों की आम जिंदगी को सब्जेक्ट मैटर नहीं बनाया जा रहा था, और अगर बनाया भी जा रहा था तो हाई क्लास, रिच क्लास की नॉर्म्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी लिविंग स्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो ऐसे में वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर एक बहुत शानदार किताब लिखी, कलेक्शन ऑफ पोइम्स उसने लिखी, जिसको लिरिकल बैलेट्स के नाम से जाना जाता है। Lyric poetry is a kind of poetry which is subjective in nature. Lyric
is a form of poem, is a kind of poem in which the poet expresses his own personal thoughts, his own personal experiences. तो इस वजह से हम इसको सब्जेक्टिव पोइट्री बोलते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसमें पोइट अपने आप को आइसोलेट करके, अपने आप को अलग करके किसी टॉपिक पे बात नहीं करता, बल्कि जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे बात करता है तो वो उसके अपने पर्सनल इमेजिनेशन, पर्सनल इमोशंस, पर्सनल आइडियाज़ और उसकी पर्सनल लाइफ या लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। तो ऐसी पोइट्री, ऐसी पोएम जिसमें पोइट की पर्सनैलिटी नज़र आए, उसकी थिंकिंग या उसकी सेल्फ ओपिनियन नज़र आए, उसको हम लिरिक पोइट्री बोलते हैं। तो लिरिकल बैलेड्स वर बेसिकली द सॉन्ग्स, the poems, and more than 100 poems were composed by Wordsworth and by Coleridge, and this book was published in 1798। तो ये 18 सेंचुरी का बिल्कुल एंड था, बिल्कुल टेल थी जब ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स सामने आई। और ये जो पोइट्री थी, इसकी जो लैंग्वेज थी, इसका जो सब्जेक्ट मैटर था, उसने इंग्लिश पोइट्री की ट्रेडिशन को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। सो इन लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर्ड दैट ही वाज राइटिंग अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री दैट ही होप्ड वुड बी वेल अडेप्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड परमानेंटली। कि पोइम्स या पोइट्री ऐसी क्रिएट की जाएंगी अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ बिलीफ, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, कि वो लोगों के जो इंटरेस्ट्स हैं, लोगों की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको परमानेंटली रिप्रेजेंट भी करेंगी और उनसे परमानेंटली अटैच भी होंगी। तो in lyrical ballads, the subject matter would be different from that of earlier giants of poetry like Alexander Pope, who was very famous poet of early 18th century, who used poetry to satirize or to persuade the reader with argumentative techniques. उसकी poems जो थी, ख़ासतौर पे उसकी एक बड़ी famous poem है The Rape of the Lock। और रेप ऑफ द लॉक पोइम में उसने नोबल क्लास की या कोर्ट लाइफ, जो प्रिंसेस के या बैरन्स के कोर्ट्स होते थे, उनके जो पैलेसेस होते थे, वहाँ की पार्टीज़ को प्रोजेक्ट किया है और उन लोगों के लाइफस्टाइल, उन लोगों की मैनरिज्म को बेसिकली सेटायर किया है उस पर। तो उसमें फिर पॉप की जो लैंग्वेज थी वो आर्गुमेंटेटिव लैंग्वेज होती थी, वो पोइट्री की लैंग्वेज को बड़ा टेक्निकल बनाकर पेश करता था। तो इस वजह से उसकी पोइट्री जो थी वो कॉमन लोगों के इंटरेस्ट से हटकर थी, या वो एक बड़ी क्लासिकल फॉर्म जिसको समझा जाता है पोइट्री की, जिसमें बड़े सेंसिबल वे से, बड़ी रीज़नेबल वे से जो है वो पोइम की क्रिएशन की जाती है। तो जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी या जो कॉलरिज की पोइट्री थी, और रिमेनिंग रोमांटिक पोइट्स लाइक कीट्स, लाइक शैली, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा मशहूर पोइट था जिसको लॉर्ड बैरन के नाम से जाना जाता है। इन लोगों की पोइट्री जो थी वो बड़ी कॉमन लैंग्वेज बेस्ड थी, बड़ी सिंपल और फ्लुएंट किस्म की फ्लो वाली पोइट्री जिसको कहते हैं, वो इन्होंने लिखी इस एज में। For Wordsworth, good poetry was the spontaneous overflow of powerful feelings। अब ये कोटेशन है, या ये कह लीजिए कि कोटेड जो फ्रेज है, ये इट इज़ टेकन फ्रॉम दी प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, जो बाद में 1802 में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था उस बुक के स्टार्ट में। और उसमें उसने पोइट्री को डिफाइन करने की कोशिश की थी, पोइट्री के न्यू रूल्स बताने की कोशिश की थी। और सबसे सिंपल, सबसे कॉमन, सबसे फेमस वर्ड्सवर्थ का जो रूल था वो ये था कि पोइट्री मस्ट बी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए कि जब इंसान के माइंड में पावरफुल फीलिंग्स क्रिएट हों, उसके माइंड में जो है वो थॉट्स का एक ओशन समझ लीजिए कि पैदा हो, तो फिर उस ओशन से इन्फ्लुएंस होकर, उस पावरफुल वेव ऑफ फीलिंग से इम्प्रेस होकर, जो भी आपके माइंड में, आपकी ज़बान पर अल्फाज आएँ, तो वो फिर स्पॉन्टेनियस फ्लो बन जाता है। एक ऐसी पोइट्री जन्म लेती है जो बड़ी फ्लुएंट होती है, जो बड़ी सिंपल होती है और जो बड़ी फ्लुएंट होती है। सच पोइट्री वुड यूज़ सिंपल, अनअडॉन्ट और less technical language to deal with commonplace subjects, to deal with the subjects of common people and the common world. It is a mistake to think of the romantics as nature poets. Some critics believe that the romantic poets were all affected by the nature and the natural phenomena. ठीक है,
in a sense, it is a valid argument that the romantic poets were basically the nature poets. Why? Because they took the subjects from the nature and from the phenomena of the nature. But it is wrong to call them just only nature poets, because they were not only the natural poets, rather these poets were mind poets as well, who sought a deeper understanding of the bond between human beings and the world of the सेंसेस. तो एक तरीके से इनको माइंड पोइट्स या रीजनेबल पोइट्स भी कहा जाता है, वो इस सेंस में कि वर्ल्ड जो भी वो देखते थे, जो भी वर्ल्ड फिनोमिना वो देखते थे, उसको वो लिंकअप करने की कोशिश करते थे विद दी ह्यूमन फीलिंग्स, विद दी ह्यूमन इमोशंस एंड टिपिकली विद दी ह्यूमन इमेजिनेशन. तो इस तरीके से एक ब्रिज क्रिएट होता था ह्यूमन माइंड के दरमियान और आउटर वर्ल्ड के दरमियान, कि जो भी आउटर वर्ल्ड के फिनोमिनाज हैं वो किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन इमेजिनेशन को अफेक्ट करते हैं. दिस इज बेसिकली द फोकस ऑफ द रोमांटिक पोइट्स. Their search also led them to a third, more mysterious element present in both the mind and nature. This element is a creative power that makes things happen, and this power is called imagination. So basically, romantic poets की poetry जो थी, that was the product, that was the creation of their imagination. The romantics thought this superior to human reasoning. कि जिस तरह से पॉप की पोइट्री थी 18th सेंचुरी की, जो बड़ी सोच समझ कर लिखी जाती थी, बड़ा रिफ्लेक्शन के बाद, बड़े गौर व खोज के बाद लिखी जाती थी, जिसमें वर्डिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता था, जिसमें फ्रेजिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता था, जिसमें राइम का बड़ा ख्याल रखा जाता था, और जिस तरह से मीटर की रूल्स होते हैं, पैरोसोडी हमने जिसको पढ़ा था, उनका ख्याल रखा जाता था. तो रोमांटिक पोइट्स जो थे वो बेसिकली अपनी इमेजिनेशन को और इमेजिनेशन की बेस पे किए गए एक्सप्रेशन को ज़्यादा वैल्यू देते थे. Each of the romantics had his or her own special view of the imagination. However, all of them believed that the imagination could be stimulated by both nature and the mind itself. कि हमारी जो imagination होती है वो ना सिर्फ इंस्पायर्ड होती है नेचर से, नेचुरल सीनरीज से, नेचुरल ऑब्जेक्ट से, बल्कि माइंड हमारा खुद भी एक तरह का एक्सप्लोरर होता है, हमारा माइंड खुद भी एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि इमेजिनेशन क्रिएट भी कर लेता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकता है. दीज पोइट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेचर्स मिस्टीरियस forces which both inspire the poet and hint at the causes of great changes taking place in the world. So romantic poems usually present imaginative experiences as very powerful and moving. This suggests that the human imagination is also a kind of desire, a motive that drives the mind to discover things that it cannot learn by rational or logical thinking. So according to the romantics and the romantic poets, imagination was the key motivator, was the key instigator of creating a kind of motive and desire into human mind to create an artificial world, to create an imaginative world. और उसमें नेचर का भी रोल होता था, प्लस पोइट की अपनी थिंकिंग या पोइट की अपनी इमोशंस का भी रोल होता था. In the preface to Lyrical Ballads, Wordsworth makes it clear that the poet is special. The poet is endowed with a more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, a greater knowledge of human nature. He keeps a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. तो poet का role जो था according to Wordsworth, that was very critical, very sensitive, because poet was like a prophet in their opinion. All romantic poets describe the poet in such lofty terms, such remarkable terms. For example, William Blake held the poet to be the bard, to be the professional poet, an inspired revealer, and a teacher. Coleridge thought the poet brings the whole soul of man into activity by employing that synthetic and magical power. And what was that synthetic or arranged or organized and magical power was? That was imagination, according to Coleridge's view. Shelley called poets the unacknowledged legislators of the world. Why unacknowledged? Because poets were not given so much value and importance as the scientists and as the philosophers were given too. But according to Shelley, poets were like the legislators, like the rules maker and the principles maker of the world.
Keats wrote that a poet is a physician to all humanity and pours out a balm upon the world. कीट्स की एक बहुत मशहूर पोइम है ओ टू द नाइटिंगेल, और एक और ओ टू द ग्रेशियन अर्न. ग्रेशियन अर्न आई थिंक सो कि वो आपके सिलेबस में भी शामिल है, हम उसको पढ़ेंगे. तो कीट्स का जो रोल था और उसकी जो पोइट्री थी, दैट वाज लाइक अ बाम, लाइक अ मेडिसन फॉर द पीपल. और ब्यूटी के ऊपर, उसकी नेचुरल ब्यूटी के ऊपर उसके थीम थे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग उसने भी पोइट्री लिखी. बट ही ऑल्सो कंसिडर्ड पोइट एज अ वेरी की रोल प्लेयर इन द सोसाइटी. Thus, the Romantics saw the poet as someone human being and society cannot be do without, जिसके बगैर society बन नहीं सकती, explain नहीं हो सकती या express नहीं हो सकती. Romantics saw a very special place for the poet or the artist in society. They saw poets in a role similar to that of a priest, as a teacher, or as a master. In the Romantic view, the poet functions as a sort of spiritual guide to the inner realm of इंट्यूशन जो इंसान की अंदर की आवाज़ होती है, जो इंसान की जो है वो एक सेंसेस की बेसिस पे बनने वाली ओपिनियन होती है. So overall, in the Romantic period, poetry was no longer used to make complex arguments in a witty, polished style. सबसे इम्पॉर्टेंट बात रोमांटिक एज की पोइट्री की वो ये थी कि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, और उसका स्टाइल जो था वो आर्टिफिशियल या पॉलिश्ड स्टाइल नहीं था. इसी वजह से, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से, अपने फ्लुएंट एक्सप्रेशन की वजह से रोमांटिक पोइट्री जो है वो स्टिल आफ्टर 300 ईयर्स वो पॉपुलर है पूरे, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी वर्ल्ड में रोमांटिक पोइट्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्कॉलरली और रिसर्च वर्क किया जा रहा है. रोमांटिक पोइट्स यूज्ड अनअडॉर्न्ड और सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन प्लेस सब्जेक्ट्स, the subjects related to the common people and the common life, the beauty of nature and the power of human imagination. तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि फर्स्ट पोइम है ऑफ द रिमार्केबल पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रिटिकल एनालिसिस और उसकी क्रिटिकल डिस्कशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब हम इन सारी डिस्कशन को या इन सारे पॉइंट्स को रिलेट करने की कोशिश करेंगे विद द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड द रिमेनिंग रोमांटिक पोइट्स. सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक.